last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. It's fine, Dad. I can handle this. इनके घर पे भी हमला Someone हुआ है. broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Doctor are important. Crazy day. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Refuse, promise कर लेते हैं. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. अब वैसे कुछ नहीं. गड़बड़ हो रही है. पहले डैड मर चुका है, निक भी मर चुका है, तो अब एना की बारी भी आ सकती है, क्योंकि किलर जो है ना वो सारों के पीछे पड़ा हुआ है. I need to get in there eventually, but maybe I should look around the property और first. अब मुझे क्या करना है, व्हील यहाँ पर देखना है. पहले मैं देख लेता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है. जॉइन एना इनसाइड द हाउस. तो सबसे पहले तो अंदर जाकर ये क्या पड़ा हुआ है. It's bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. तो अब मुझे अंदर जाना है घर के, और अंदर जाकर मुझे एना से बातचीत करनी है, और मेरे ख्याल से शायद कोई इन्वेस्टिगेशन भी हम करें अंदर जाकर. हो सकता है जहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है उस जगह की. यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है, गड़बड़ हुई है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा. This place was tossed. Maybe looking for something. Anna's not having a great day. Focus on her before you go into detective mode. Sam. Tell me what you found. No, Dad, I found. I found exactly what you were hoping I wouldn't find. Nick was murdered. He... कुछ बताना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 बंदे मर चुके हैं, इसलिए इनको पता होना चाहिए कि किलर जो है ना वो सारों के पीछे पड़ा हुआ है. अब तो कोई भी अगला हो सकता है जिसको वो मार दे. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here.
I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया. फाइंड अ वे टू कॉन्फ्रंट एना. और एना ये बैठी हुई है. I've never even had my car broken into. It's hard to imagine how she feels. शी फील. यहाँ पर चीज़ें सारी बर्बाद हो चुकी हैं और अब मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर देखना होगा. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. और ये क्या है? माइंड प्लेस. अच्छा, ये दोबारा से अपनी मेमोरीज में चला गया है. दोबारा से मेरा ख्याल इसको कुछ याद आ रहा है. देखते हैं. ये डेस्क और मेमोरी. Sam. रिमेंबर. Sam, what are you doing? ये पुरानी I यादें called for हैं. dinner like a dozen times. It's gonna get cold. सैम यहाँ I पर am not होमवर्क your में mom, मसरूफ you है know. अपने. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. ये पुरानी बातें थी जो उसको एकदम से इस डेस्क को हाथ लगाते हुए याद आ गई. और ये ऊपर क्या है? Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं काफ़ी. पोस्टर्स. Cheesy action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. चीज़ों को फ़िलहाल हम अभी देख ही रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो अभी कुछ नहीं कर रहे. वैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है. This feels like the only part of the house I recognize. और इसको पुरानी बातें याद आ Whenever रही है यहाँ punk की. broke in here, wrecked it. यही कुछ चल रहा है अभी तो. यहाँ की सफाई हम कर रहे हैं. There. कुछ चीज़ें सेट कर दी हैं. बाकी देखते हैं अब और क्या यहाँ पर करना है. म्यूज़िक और गिटार. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. ये क्या है? I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं, देख रहे हैं. और ये तस्वीर किसकी टूटी हुई है? इसके पीछे भी है कुछ यहाँ पर. ये क्या है? I got this for Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. जनरल अपडेटेड. अब देखते हैं क्या अपडेट हुआ है. हमारे ऑब्जेक्टिव अपडेट हो गया है कि नहीं हुआ. फाइंड अ वे टू कम फ्रेंड. मुझे लग रहा है इसके घर की थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी. और यहाँ पर किचन में क्या हो रहा है ये देखते हैं हम. किचन की भी हालत ख़राब हुई हुई है. ये क्या है? Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? खाली बोतल टूटी हुई पड़ी है यहाँ पर. और हिम. Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. अच्छा, तो फ्रिज से हमको चीज़ निकालनी है या फिर यहाँ पर नोट्स हैं. Even when he messed up, Nick always found the right words. और ये क्या है? टिकट्स. Anna's favorite band. Smooth as always, Nick.
नीचे क्या है, नीचे क्या है? नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मैग्नेट। And I always wanted to visit France. But life is just too strange for me there. बस मेरे ख्याल से यही चीज़ें हैं यहाँ पर लगी हुई, और तो कुछ भी नहीं है इसके साथ। फ्रिज की भी हमने जांच पड़ताल कर रही है, और यहाँ पर चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं हर तरफ। देखते हैं इस कमरे को खोल के अंदर जाके। She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam stuff. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. तो उस कमरे को हमने बंद कर दिया, नहीं देखा यहाँ पर क्या है क्या नहीं। चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, और फिर वापस जाते हैं मेरे ख्याल है ना की तरफ, या फिर ये सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं। ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये मेरे ख्याल निक है। तस्वीर को हमने लगा दिया है यहाँ पर सही करके। और ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर? पिक्चर्स। सही, एक पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर, बंदे हैं काफ़ी सारे इसके अंदर, पता नहीं कौन कौन है अब। और यहाँ पर देखते हैं क्या है सीन। इसको भी ठीक करना है। ये लो, Finally, there. फाइनली देयर। उसके घर की थोड़ी सी हम सेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बाहर जाने का रास्ता है मेरे ख्याल से। मुझे ऊपर भी जाना है कि नहीं जाना? नहीं जा I तो know you रहा want है। to help her by finding out what happened. Right now, though, stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. चलो अब दोबारा से मेरे ख्याल ऐना के पास जाना पड़ेगा हमें। ऐना तो बातचीत कर नहीं रही हमसे, दोबारा से ट्राई मारते हैं। I've never सिर्फ even ये had my लोग ही car कर रहा है broken इसकी तरफ। into. It's hard to imagine how she feels. और ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, फाइंड अ वे टू कम्फर्ट ऐना। तो और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? यहाँ पर हद तक तो दुरुस्त कर दिया था जितना हो सकता है। चीज़ें कुछ चेंज हो गई हो यहाँ पर। ये ज़मीन पर कुछ है, आर्टिकल, पूरा आर्टिकल ही यहाँ पर लिखा हुआ है इसने। Hannah always was more interested in people than cold hard facts. Not surprised Anna keeps this letter. डियर मिस I'd keep मिलर। it too. और क्या है? मेडिकल बिल्स यहाँ पर, ये तो मैंने देखे थे, डेस्क भी देखा था। और यहाँ पर और तो कुछ भी नहीं है। टीवी बंद पड़ा हुआ है, टीवी को हम नहीं देख ही नहीं सकते। और क्या है यहाँ पर? बाकी ये टेबल इधर उधर बिखरा हुआ है सारा। इसको भी देख लिया था पहले। ये म्यूज़िक शीट है। ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर वो बंदा जाते ही हमें नीचे वापस तैयार है जाने का, कि ऐना के पास ही रहना है। तो क्या ऐसा तरीक़ाकार हमें आज़माना है जो कि ऐना जो है वो कंफर्ट हो जाए, ऐना को रिलैक्स करना है। लेकिन अभी भी पता नहीं लग रहा यहाँ पर क्या है। No drinks in here. लो भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीचे भी है कुछ। इसको खोल के देखते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं खुल रही थी, यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। Ah, here's where she keeps the drinks. शायद इन चीज़ों से कुछ काम बन जाए। चॉकलेट ड्रिंक, या फिर चॉकलेट ड्रिंक। On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping.
Yes, I am. Yes, you are. Thanks. तो हमने यहाँ पर जूस डाल लिया है और शायद ये ऐना के लिए लेके जाएं। इससे फिर से बात करनी है। What are you waiting for? Bring it to her already. ओके, तो जा रहा हूँ मैं ऐना के पास। मेरे हाथ में जूस तो नज़र नहीं आ रहा वैसे। अब इसे Lime टॉक कर juice. सकते हैं। Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it Give related her to the Nick's drink, death? let her go Did his on. murderer break? You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. ऐना जो है वो ज़्यादा ही Hey, परेशान हो are you गई है feeling इन better? चीज़ों को देखकर, क्योंकि अब Yeah. इसको पता Thank लग you, गया कि Sam. निक का मर्डर हुआ Sorry, था। I just kind of और lost it for a डेनिस का भी। second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Ask him, I am here with you, you and both. She needs support. Something solid. It's going to be okay, I am with you. Whatever happens, you're not alone. We'll face it together. Yeah. Yeah. Thank you. I needed to hear that. Reminding her she has people to lean on is a great start. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack, come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. That's not fair. We both to blame. I deserve that. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. Time. I don't listen to you. You did not want me. I did not listen to you. I know, the timing wasn't great. Your dad's accident, the mine investigation, me being hated by all of Basswood. That's not why I said no. You knew I didn't want to get married. I told you before, I never liked the idea. Never wanted a ring. When you asked, I just thought I was with someone who didn't know me. That terrified me. And then it ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick.
if my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. It's not your fault. She's feeling guilty about what happened. She shouldn't bear that burden alone. It was not your fault. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean, I need to clear my name, of course. I want to know who killed Nick as much as you do. Let's get the asshole who did this behind bars. It's the only thing we can do for Nick now. I just keep bouncing back from terrified to angry. That is very understandable. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. तो इससे हमने बातचीत कर ली है कंप्लीट, और अब हमने करना है घर के ऊपर वाले हिस्से का मुआयना। इसने ही हमें कहा है कि भाई ऊपर जाके देख ऊपर क्या हो रहा है। तो देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है, या फिर ऊपर भी तोड़ फोड़ हुई है, या हाँ यहाँ पर भी सारी गड़बड़ हो चुकी है, पूरे घर में ही तोड़ फोड़ हुई है। It looks like Joan's using this room now. लेकिन Anna बस must have ये been यहाँ letting her पर use it बच when she गए। stayed over. Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date. ये फिर से यहाँ पर हम डेस्क है, और क्या है, यूनिकॉर्न बेड पड़ा हुआ है, माइंड प्लेस। फिर से इसको कुछ याद आएगा इस जगह के बारे में। देखते हैं इस बार कौन सी मेमोरी जो है वो सामने आती है। इसके पास जाते हैं और मेमोरी मैस यहाँ पर Not देखते your हैं। standard thief. Too destructive. Maybe trying to send a message? और नहीं, इससे आगे नहीं जा रहा। बाकी चीज़ें बिखरी हुई हैं सारी, और ये चीज़ें यहाँ पर अंदर भी कुछ नहीं है अलमारियों के। तो दूसरे कमरे में जाते हैं, शायद वहाँ पर कुछ हो, या फिर इस जगह पर कुछ होगा। देखते हैं, यहाँ पर भी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये क्या पड़ा हुआ है, और ये क्या है? As if her week wasn't bad enough already. वॉच यूर बैग। I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. यहाँ पर ये कुछ लिख के चले गए हैं मेरे ख्याल से, जिन्होंने यहाँ के तोड़ फोड़ की थी, ये उन्हीं का ही काम है। Why is it so dark in here? यहाँ पर फिर से बेड This है। room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. और एक और कमरा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो जा ही नहीं रहा। ये क्या पड़ा हुआ है? लैपटॉप। Is someone downloading something off Nick's laptop? निक के लैपटॉप में से कोई चीज़ें चुरा रहा है, या फिर कुछ हो रहा था यहाँ पर गड़बड़। जो भी किलर था मेरे ख्याल से, जो भी यहाँ पर आया था, ये है कोई बंदा पीछे। ये अभी भी यहीं था छुपा हुआ, जो भी था।
उसने हमें नीचे लिटा दिया और ख़ुद वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। वो यहीं पर छुपा हुआ था। ओ तेरी Sam! खैर। Sam! Who was that? Sam! Are you okay? जो I भी think कुछ whoever चीज़ trashed थी your house वो just लेके निकल गया trashed यहाँ से। me. Can you stand? Yeah. Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Find Nick's secrets. Find the man who walked me. Find Nick's backup files. We need to find the man that clocked me over the head. They know what they took, and I bet anything they knew Nick. Has Nick seen or been talking to anyone out of the ordinary lately? Anyone new? No. No, I don't think so. I don't. Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. He said he was night fishing. But if he was secretly meeting someone there to interview for a story, It'd be worth taking a look. अब वो बंदा जो है यहाँ से लेकर निकल गया चीज़ें। Your father called, said there'd been a break-in? ये पुलिस आ गई है इधर। couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. फिशिंग Sounds शैक, like if अब Nick हमें was वहाँ hiding ही जाना something, it है, might be there. यहाँ से निकल के किसी तरीके से। Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go. चलो पीछे वाले दरवाजे से हमें निकाल दिए क्योंकि डेनिस की बॉडी उनको मिली हुई थी, तो उन्होंने हमें पकड़ लेना था उसके कत्ल के इल्ज़ाम में। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।